Hello students, today we are going to start chapter 2nd of civics for class 6. Chapter's name is prejudice and discrimination. This is the first part of this chapter. First of all, we had studied about diversity and prejudice. Students, what is prejudice? Prejudice means you can say partiality, or when someone forms an idea about someone else without actually knowing anything about them. Prejudice is when you think badly of someone based on their religion, caste, disability, or race, or some other quality, even though you may not even know them. Prejudice मीन्स अगर आप किसी के साथ पार्शियलिटी करते हैं उसके रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर के, जबकि आप उसको जानते तक नहीं हैं और उसके रिलीजन और कास्ट के बारे में बैड थिंकिंग रखते हैं. People are different in many ways. Some of the most obvious differences we may notice are age, language, culture, appearance, disabilities, race, and religion. Unfortunately, there are some who only like to interact with those who are similar to them. They dislike those who are different from them. They are said to be prejudiced. Means हम लोग में क्या होता है, हम लोग के रिलीजन में या हम लोग की कास्ट में कभी कभी लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उनके जैसे दिखते हैं, और जो उनके जैसे नहीं दिखते हैं वो उनको अपने से अलग रखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज prejudices create stereotypes. Stereotypes means an often unfair and untrue belief that many people have about all people or things with a particular characteristics such as their gender or race. हिंदी में आप स्टीरियोटाइप्स कह सकते हैं रूढ़िबद्ध धारणा, किसी के प्रति एक धारणा बना लेना. Stereotypes are widely held as an oversimplified image about a particular type of person or thing. Stereotypes based on whether you are a boy or a girl are called gender stereotypes. Gender stereotypes जैसे बोलते नहीं, आप लड़के हो या ये लड़की है, ये वो नहीं कर सकती, ये वो नहीं कर सकता. All these types. Students, you all have listened that why do people have different sets of expectations from boys and girls, or you had listened also, why are you crying like a girl, you must help out your mom in this kitchen, girls must know how to cook, you want to be a nurse but that is a job for women. These types of questions or lines you have listened. Boys are expected to do something which girls are not, and the other way around too. We believe they must behave in certain ways. We fit them into images that the society creates. Such images are called stereotypes. जैसे हम लोग के यहाँ होता है कि ये काम सिर्फ लड़के ही करेंगे, या ये काम सिर्फ लड़कियाँ ही कर सकती हैं, ये काम सिर्फ उस कास्ट के लोग ही करते हैं, या ये वर्क उस कास्ट के लिए. दीज टाइप्स ऑफ इमेजेस, सच इमेजेस आर कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स. ये इमेजेस सोसाइटी क्रिएट करती है, इसी इमेजेस को हम लोग स्टीरियोटाइप्स कहते हैं. Some other types of stereotypes of some other ways to stereotype people are the basis of their religion, political views, race, cultural types, and physical appearances. अदर टाइप्स के अदर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, जैसे कुछ लोगों की रिलीजन, पॉलिटिकल व्यूज, रेसेस, कल्चरल टाइप्स के अकॉर्डिंग ही उनको देखा जाता है. Generalization of a person's behavior based on their race, religion, or cultural and physical appearances should be avoided.
Stereotypes prevent us from considering each person as unique with special qualities and skills. हम लोगों को क्या करना चाहिए? स्टीरियोटाइप्स प्रिवेंट अस, जो स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग है वो हम लोगों को किसी भी पर्सन की स्पेशल क्वालिटी को या स्किल को पहचानने से रोकती है. Other points we will learn in the next part. Thanks for watching.